Okay, fine. So we will start one by one. Uh, Aryan, please give the introduction once. Yes. Hello, sir. My name is Aryan. I have completed my MTech from IIT Kanpur in Electrical Engineering Department, where I have secured a CGPA of 7.63. There, I have done a research work on the embedded system. The thesis title was Initialization and Calibration of MEM sensor, which are accelerometer, magnetometer, and gyroscope, where I have used Okay, STM32 microboard and Adafruit LSM9 DS1 sensor. There I have mm-hmm. integrated that and I have calibrated the accelerometer, magnetometer, and gyroscope. Okay. Sir, So I have, yes, sir. yeah, yeah, continue, continue. Sir, I have done my BTech from Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad in Electronics and Communication Department. There I have Hmm. secured a CGPA of 6.72. There, sir, I have done the BTech final year project on the driverless car parking system. Where, Okay, yes, sir, I have done some Verilog projects whose topics are asynchronous FIFO, synchronous FIFO, automatic washing machine, MIF 32. And sir, there I have done verification project with the help on system Verilog, which are synchronous FIFO, full adder, half adder. Sir, ठीक है, I have, ठीक. yes, sir. So आप कौन सी प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं अभी? Sir, mainly I am targeting design verification. Okay, okay, fine, Because on fine. this, sir, because on this resume, I have got the two times call from the Texas. Okay, 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 fine. Okay. So okay, you are okay. So what about the Ankit? Ankit, give the introduction once. Yes, sir. My name is Ankit Raj, sir. I have completed my BTech in Electronics and Communication Engineering from RVS College of Engineering and Technology. Currently, I am working as a project engineer in DRDO RCI Hyderabad. I have recently covered Verilog or System Verilog from VLSI for all, and in DRDO, I have completed a verification test in BLDC motor control. Uh, Okay, okay, fine. Tell me the difference between reg and wire. Ankit, you can start. Yes, sir. Uh, Sir, Right. sir, in Rage we can store data, but in Wire we can it just like connecting between test bench or yeah, design code. Okay, okay. Aryan, you can continue. You can take the question. Same question. Sir, register basically I use to hold the value for a period of time, and sir, wires are used for basically combinational purposes, combinational block. Sir, register is used in the always procedural block, and sir, wires are used for assignment operators. Okay, okay, fine. जब आप explain करोगे, you have to give the example also in the interview, right? So Okay, sir. try to give some interviews, like syntax लिख सकते हो या फिर उसका output दे सकते हो, right? So ये आपको बहुत ज्यादा important है, ये आप चीज का याद रखना. Then the difference between blocking and non-blocking assignment. So आपने FIFO design किया है, right? You have designed the FIFO. So you have to use the blocking or non-blocking assignments there. Sir, non-blocking. Non-blocking. Okay. Tell me the difference between non-blocking and blocking then. Sir, non-blocking assignments, sir, evaluate first the right. Sir, they don't block the evaluation of the next assignment, next statement which has written in the non-blocking statement. But in blocking statement, the statement one will be evaluated first, then it will go to the statement two. But sir, in non-blocking, statement one, statement two, and statement three are written. So the RHS of all three statements are evaluated at the same time. It doesn't block the execution of the next statement. So write the example also. You can write some example and tell me. Fine. Ankit, you can continue. Yes, sir. Sir, in blocking assignment, it happen in active region, but in non-blocking, in active region, in blocking assignment, both evaluation and assignment will occur in active region, but in non-blocking assignment, it will occur in NBA region, non-blocking region.
here assignment is done in non-blocking region, and Okay. evaluation will done in uh, active region for non-blocking. Okay. So what will happen if we mix the both blocking and non-blocking in the same block? In always same block, in same always block. If we mix both the things like blocking and non-blocking in the same always block. Sir, if we mix both blocking and non-blocking, then uh, for example, sir, up if A will assign in if A will assign to B and B is value of 5, then in blocking A will directly take the value of 5, but in non-blocking, first of all, first assignment is completed, then after that blocking will continue. Error देगा या नहीं देगा? Adder, It sir. will give the error or not? Error देगा या नहीं देगा if we mix both non-blocking and blocking in the same always block? It will give the No, error or not? No? Okay. Yeah. So, Aryan, you want to answer? Sir, which one? Like if we mix the blocking, not blocking in the all same block in always block, in same always block, mix दोनों को कर देते हैं. No, sir, it दोनों will not give the error. not give the error. Okay, No, okay. sir. Just check it once, fine. And you can Okay, sir. execute ही करके देख लेना है ना. Okay, Execute ही sir. करके देख लेना. Error देता है वो है ना. Race round condition, unpredictable error है ना कुछ simulation error देता है ना. Okay, Okay, sir. fine. सर मतलब आउटपुट Yeah. में चेंजेस थोड़ा दिखेगा, बट जैसे नॉन ब्लॉकिंग के हिसाब से नॉन ब्लॉकिंग जो जैसा काम करता है और सर जैसा ब्लॉकिंग काम करता है वैसा तो वो इवैल्यूएट होगा, बट वो सही से आउटपुट नहीं देगा. हाँ ठीक है, आप एक बार रन करके देखना है ना उसको. ओके ओके. अलग अलग कंडीशंस में से एरर देता है वो एक्चुअली में. ओके कोई नहीं. यू कैन शो मी द एग्जांपल. आर्यन, शो मी द एग्जांपल. आपने लिख लिया? Yes, sir. हाँ Uh, दिखाओ. Sir, both the examples are same, but the difference is in this one, which is using a non-blocking blocking statement, and this one it is using non-blocking statement. All the values are same. Here, sir, I have taken A is equal to 1, B is equal to 2, and C is equal to 3. My first statement is A is equal to B plus C, and the next statement is D is equal to A minus B. Sir, in blocking statement, first A is equal to B plus C will be evaluated, where A value will come out to be 5. Then D is equal to A minus B, which comes out to be then the A value which is taken in this blocking statement. So A will be taken as 5. So answer will be D is equal to 3. But sir, in non-blocking case, the right hand side of both the statement will be evaluated at the same time. So it will be evaluating A plus B plus C and A minus B at the same time. So and when, sir, at the end of the execution, when these values will be assigned to A and D respectively, so the A value will come out to be 2 and D value will come out to be -1. So where we are using blocking and where we are using non-blocking? Which circuit? How you decided? How you decide? Sir, mainly non-blocking statements are used in the always block. Okay, okay. ऐसा And नहीं sir, है blocking. Blocking is for the combinational circuits and non-blocking for the sequential circuit generally. You have seen this statement? mm, Blocking is for the combination and non-blocking is for the sequential circuits. You have seen this statement or not? no, sir. Actually, I have not seen it, but they said that it's a good practice to use a non-blocking statement in the procedural blocks and the blocking statement in the assignment statements. Okay. आप एक बार ये statement check करना. Okay, sir. Blocking is for the generally it is for the blocking is for the combination and non-blocking for the sequential circuits, right? To avoid the race simulation race round condition, race Yes, sir. condition. Because sequential circuit will be synthesized when there will be an procedural block. तो एक बार ये स्टेटमेंट आप देखना है ना, Okay, sir. क्योंकि ये हम जर्नली है, ऐसा नहीं कि 99 केसेस में यही है, एक दो चांसेस में हम चेंजेस कर भी सकते हैं. जर्नली मैं बता रहा हूँ, है ना. ओके Yes, sir. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज difference between the
always at the rate bracket slash and always slash ff, you know. Sir, repeat the question. Okay, I will write in the chat box also. uh, Always at the rate, you can write it there. Always at the rate bracket Always star bracket at at the rate bracket star. bracket close, open bracket, Okay. inside the bracket we have the star, and always slash सर, ऑलवेज एट द रेट, फिर ब्रैकेट में स्टार डाल दिए, फिर उसके बाद क्या करना है? दूसरा स्टेटमेंट है ऑलवेज अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट ऑलवेज स्लैश 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 एफ एफ। एफ एफ। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर, पहला वाला में ऑलवेज एट द रेट स्टार में ये होगा कि अगर हम लोग कोई ऊपर वेरिएबल लिए हुए ए बी सी डी, और वो इनपुट्स वेरिएबल है, अगर ए बी में अगर कुछ चेंजेस आया, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट काम करेगा। वो स्टार वाला है ना, वो एक हाँ सेंसिटिविटी लिस्ट टाइप से है कि जब जब वो चेंजेस हाँ, आता है ए और बी में, तब तब वो उसके अंदर कंडीशन जो भी है वो इनपुट हिट में, करेगा। बेसिकली इनपुट में चेंजेस सेंसिटिव टू ऑल द इनपुट्स, राइट? यस सर, यस सर। ओके ओके, एंड सेकंड वन सर, ऑलवेज स्लैश एफ एफ। फ्लिप फ्लॉप, बेसिकली एफ एफ मींस फ्लिप फ्लॉप। ओके, ओ सर, इट मीन्स जब जब सर फ्लिप फ्लॉप एक तरह से सर इनपुट्स हो गया क्या? मतलब कोई वेरिएबल है एफ एफ? एफ एफ इज स्लैश स्लैश एफ एफ, एफ एफ मींस फ्लिप फ्लॉप। सर, जैसे लिखते हैं आपने ऑलवेज एट द चलो, रेट पॉजेस ऑफ क्लॉक, और पॉजेस ऑफ क्लॉक फिर एक ब्रैकेट में हम लोग कुछ लिखते हैं, ये एफ एफ क्या हो गया? ये मैंने नहीं देखा। ओके कोई नहीं। आपने देखा है आर्यन? आर्यन आपने देखा है? नो सर। Okay. See, सर first one is for the combination circuit, and second one is for the sequential circuits, basically for the flip flop, where we are using post age trigger clock, right? Post age trigger clock पे वो changes दिखाएगा, right? Second वाला, फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन के लिए, सेकंड वाला सिक्वेंशियल के लिए। आप एक बार बाद में देख भी सकते हो, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है ना, इसका आंसर सर क्या होगा? हाँ सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि पहला वाला लिखा हुआ है ऑलवेज एट द रेट ब्रैकेट में स्टार, और हाँ सपोज इनपुट हमारे पास ए बी और सी है, और हमने सर हाँ, वायर्स भी लेने पड़े हैं बीच में, तो सर वायर्स को भी वो लेगा स्टार? क्योंकि वायर, सर जहां तक मैंने पढ़ा है कि इनपुट्स भी लेता है और साथ साथ में जो नेट्स हमने डिफाइन किए वो भी शायद लेता है स्टार। तो इनपुट्स को लेता है, वो इनपुट्स को लेता है। सर मतलब कि अगर इनपुट ए बी है और मैंने नीचे वायर डी लिख रखा है, तो सर अगर डी में हम्म, चेंजेस होंगे तो डी को वो कंसिडर करेगा एज अ इनपुट? डी को एक बार चेक करते सर हैं, क्योंकि एक मैंने बार एक जगह पढ़ा ऐसे। था, एक जगह मैंने पढ़ा था उसमें बताया था कि इनपुट्स जो होते हैं उसको भी कंसिडर करता है, और जो वायर्स जो नेट्स हमने डिफाइन किए हैं अपने खुद से, हम्म, इंटरमीडिएट नेट, शायद वो उनको भी सभी वो इनपुट्स कंसिडर को करता लेता है। है, वो सभी इनपुट्स को लेता है। हाँ सर, वो आउटपुट्स हटा के बाकी सारी चीजें जितनी है उसमें इनपुट्स और नेट्स उन दोनों को सर वो देखता है शायद। हाँ, वो लेता है उसमें, लेता हम्म। है। बाकी ये वाला जो मैंने बताया आपको, एक बार अभी पूछा गया था इंटरव्यू में रिसेंटली, तो ये वाला एक बार देखना है ना, ओके सर, ऑलवेज ओके वाला सर। है ना। और ओके सर। एफ एफ वाला हम इस पोस्ट एज के लिए यूज करते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स के लिए, सिक्वेंशियल सर्किट्स के लिए, राइट? So next question is race. Tell me about the race condition in Verilog. So Aryan will tell, then Ankit will tell. Race condition. सर वेरीलॉग में रेस अराउंड कंडीशन का नहीं पता है। तो वैसे जनरली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सर जेके फ्लिप फ्लॉप्स नहीं, में होता एग्जाम्पल तो देखा होगा ना, एग्जाम्पल देखा होगा ना वेरिलॉग में कोई है, नो सर रेस ऐसा कोई कंडीशन देखी एग्जांपल है? सर अभी तक आया नहीं है सर सामने। ये तो पूछा जाता है क्योंकि इंटरव्यू में। आपने देखा है अंकित? ये सर, सर जैसे रेस अराउंड कंडीशन में क्या होगा कि सर, मैंने स्क्रीन शेयर करूं क्या रेस ईडीए कंडीशन है, प्लेग्राउंड का? रेस राउंड कंडीशन है, रेस कंडीशन है खाली। हाँ अच्छा, ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो, आप स्क्रीन शेयर कर दो, कोई नहीं। ओके, मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। सर, ये ईडीए का दिख रहा है? हम्म, सर, मेरा स्क्रीन विजिबल है? हेलो?
नहीं, स्क्रीन नहीं अभी दिख तक रही। तो नहीं, नहीं है, स्क्रीन शेयर करो। हाँ अभी आ रही है, अभी आएगी। ये ईडीए का अब प्ले, आ गई। ईडीए का आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, आ रहा है। सर वन, सर जैसे इसके अंदर हम लोग सिंपल सर एक मैं लिख रहा हूँ जैसे, हम्म, हम्म, हाँ, इंट एज इक्वल टू 5 और इक्वल टू 6। और सर इसमें हम लोग अगर एक ही टाइम पे हम्म, ऐसा नहीं सर, कुछ और एग्जाम्पल था, नहीं आ रहा मेरे को। क्या मतलब देखा है ना आपने, क्या होता है क्या उसमें, होता है क्या आप सर कहते हो उसमें कि। होता है कि एक टाइम पे अगर अगर सर दो इनिशियल ब्लॉक है और दोनों इनिशियल ब्लॉक में सर अगर हम लोग ए इज इक्वल टू बी लिखे हैं और उसमें भी ए इज इक्वल टू बी लिखे हुए हैं, तो सर जैसे हाँ ऐसा सर कुछ जैसे इनिशियल ब्लॉक में हम्म। सर ए इज इक्वल टू बी है और एक और हम्म, इनिशियल ब्लॉक है उसमें भी सर ए इज इक्वल टू बी है। दोनों में सर बी ए को बी का वैल्यू मिल रहा है, बट क्या होगा कि एक टाइम पे तो सर कोई एक ही चलेगा ना, तो हम्म, इसमें सर रेस अराउंड कंडीशन हो जाएगा, ए का सर कुछ भी वैल्यू आएगा, बट इसमें अगर हम लोग नॉन ब्लॉकिंग यूज करेंगे तो उससे बच सकते हैं। हम्म। ठीक है, ठीक है। बेसिकली एक बार आप देखना इसको, इसके एग्जांपल्स देखना है ना। ओके। ओके सर। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू देखा होगा राइट, तो उसका यस मतलब सर। क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, एंड गिव द एग्जांपल आल्सो, एंड गिव द आउटपुट फॉर टू बोथ। एग्जांपल के बाद समझाना है आपको, एग्जांपल के साथ। अगर ईडी प्लेग्राउंड पे लिख सकते हो तो ईडी प्लेग्राउंड पे लिख सकते हो, और आर्यन आप विदाउट पेन एंड पेपर पे भी बता सकते हो। यू कैन टेल मी द डिफरेंस एंड गिव द सम एग्जांपल। आर्यन, यू हैव हर्ड माय क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन सुना है? यस सर। हाँ ठीक है। सर हाँ टेल मी। सर दोनों एक्चुअली कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। सर जैसे कि a इज इक्वल टू बी है, और सर ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, और सर a की वैल्यू 0 0 और b की वैल्यू अगर 0 x है, तो सर इसमें तो ये हम्म। 1 दे देगा। लेकिन सर ट्रिपल इक्वल टू में क्या होता है, हर बिट सर कंपेयर करता है कि वो दोनों इक्वल है या नहीं। तो सर अगर इस केसेस में पहली बिट तो सर 0 0 है तो वो तो चलिए ठीक है, लेकिन दूसरी बिट जो है सर वो 0 और x है, तो इसमें इस केस में सर वो 0 दे देगा। ओके, करेक्ट, ओके। सिमिलरली फॉर द जेड, जेड के लिए भी है ना। हाँ सर, वो x और जेड, z दोनों सेम ही है उसमें।
एक्स और जेड में डिफरेंस क्या होता है? सर एक्स जो होता है सर वो डोंट केयर होता है, और सर जेड जो होता है सर वो हाई इम्पिडेंस स्टेट को डिफाइन करता है। ओके, हाई इम्पिडेंस मतलब लाइक इट इज सर 1 सर और 0, व्हाट? सर एक्चुअली मतलब सर हाई इम्पिडेंस रेट सर उसको कह सकते हैं जैसे कि सर अनकनेक्टेड इन आउटपुट है सर, जैसे कि हम लोग कहते हैं सर कि वीएलएस सर चिप में अगर 0 और 1 जो जा रहा है सर गेट से, तो वो किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जा रहा है, लेकिन सर अगर उसका आउटपुट ही किसी कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग हाई इम्पिडेंस स्टेट बोल देते हैं कि वो एट अ हाई इम्पिडेंस स्टेट है, क्योंकि सर उसके लिए कोई चार्जिंग या डिस्चार्जिंग पाथ ही नहीं है कैपेसिटर के साथ, क्योंकि वो जुड़ा ही नहीं है। ओके ओके ओके। या आपने लिखा है अंकित, हैव यू रिटन द सर कोड? लिखा तो नहीं है सर, वही ये केस इक्वलिटी और मतलब ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में सर, डबल इक्वल टू सर सिंपली कंपैरिजन करता है और ट्रिपल इक्वल टू बिटवाइज कंपैरिजन करता है। ओके ओके, फाइन फाइन। ओके, you talked about the regions, right? So tell me about the regions. What are the regions? Why there is need of the regions, and how many regions are there? You can give some examples also. So tell me about the regions, right? How many सर regions are there? Verilog, mainly about the Verilog. Yeah. yes sir, first region is active region, then inactive region, NBA region and postponed region. Sir, in active Hmm. region, blocking assignment will occur, both evaluation and assignment both are occur in active region, and display will also occur in active region, uh, and in inactive region has zero will occur in inactive region, uh, or in active region, active inactive. And in NBA region, non-blocking assignment uh, assignment will occur, and evaluation of no, in non-blocking assignment will occur in active region, or in postponed Okay. region, dollar strobe and dollar monitor will occur. Okay. 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 Yes. You can write the example also, like dollar monitor, dollar stove, and all. Right? You can write the example also. You can write the example on ED playground if you want. Okay, Otherwise, you okay. can stop the ED playground if you are not like working. Okay. Aryan, you want to explain it? Sir, actually, sir, there are four. Actually, I know about active, inactive region and NBA region. Sir, in active region, like if we talk about the blocking statements, the blocking statement execution will happen in the active region. So the calculation of the RHS part and the assignment to the LHS part will happen in the active region. And sir, if we talk about the non-blocking statements, the RHS part, the calculation of the RHS part will be happening in the active region. But sir, the assignment to the left-hand side will be happening in the NBA region. Okay. Okay. Sir, And postpone reason is also. sir, postpone region is actually at the end of the simulation. What other things are Okay. happening? So, like like Ankit said, dollar stop. So, dollar stop is always at the end of the simulation time. So that will happen in the postpone region. Mm-hmm. You can make Uh, the diagram also. Have you seen the diagram of this regions? sir, actually, I don't know the flow of this diagram. Okay. 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 Ankit, you know? ये सर, ये पहले कोड लिख रहे थे सर, क्या पहले डायग्राम बताएं? ओके ओके। नहीं नहीं, हाँ कोड लिख लो, पहले कोड लिख लो फिर डायग्राम सर बताओ, ये है ना? स्क्रीन दिख रहा है मेरा, एडीए वाला? हाँ, एक सेकेंड। हाँ दिख रहा है। हाँ सर, इसमें ये इसको, सर इसमें ये है कि हम लोग ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 1 है। अगर सर इसमें हम लोग डिस्प्ले लगाते हैं तो हम लोग करंटली ए का वैल्यू 0 और 1 देख सकते हैं। और फिर अगर ये ए का वैल्यू यहाँ मैंने चेंज किया और यहाँ डिस्प्ले मैंने अभी नहीं लगाया हुआ है, तो ये मेरे को जब तक इसके लास्ट में इसके बाद अगर डिस्प्ले लगाएंगे तो ही दिखेगा। बट डॉलर मॉनिटर्स क्या करता है कि हर एक जब जब ए और बी का जब जब वैल्यू चेंज होता है तब तक वो हम लोग को डॉलर मॉनिटर वो दिखाता है। जब जब वो चेंज होता है वेरिएबल्स का वैल्यू तब तक दिखाता है, और डिस्प्ले वो करंट करंट टाइम में जो चेंज हुआ उस पे दिखाता है। ये डिस्प्ले आपका एक्टिव रीजन में काम करता है, मॉनिटर आपका पोस्टपोन रीजन में काम करता है। ठीक है। ओके ओके। ओ या, so tell me the diagram also. You can make the diagram.
Meanwhile, Aryan will tell me the difference between monitor display and this stop, right? With example. No. So dollar display is basically like a print statement in the C. We say that like whenever it encounters this statement, it will display all the things written in the curly braces. Like here it is written that A is equal to percentage 0D comma. So sir, Hmm. it will just print on the terminal, and percent 0D is a specifier. So it will take the value of A and it will print there. But sir, Okay. and only this happens only a single time in the display when this display keyword is encountered. But sir, dollar monitor has a different use case. Whenever the inputs written in the monitor will change, then the monitor will become active, and at that time it will print the statement, and it can happen Okay. n number of times. Hmm. Okay. Write the example also. Give some example. Okay. And you know about the VHDL also? VHDL पता है आपको? VHDL? Ankit, you know the VHDL also? सर VHDL सर उतना जितना अच्छे से वेरिलॉग आता है उतना अच्छे से VHDL नहीं नहीं, आता है सर। सिंटेक्स वगैरह पता है? सिंटेक्स वगैरह पता है? सिंटैक्स अभी सर याद है या नहीं सिंटेक्स वगैरह? सिंटेक्स अभी याद है या नहीं है? नहीं सर, सिंटैक्स अभी उतना याद नहीं है। ओके, 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 फाइन, फाइन। कोई नहीं, कोई नहीं। सर ये मैंने EDA पे कुछ लिखा हुआ है। या एक्सप्लेन इट। यू कैन एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन। सर ये रीजन एक्सप्लेन करें? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके ओके, ओके। So how many data types are there in Verilog? Data types in Verilog. सर इन वेरिलॉग इन इंट रेज लॉजिक Verilog, बी Verilog में लॉजिक आता है। ओके, वेरिलॉग में सर ओके, लॉजिक आता है ना, लॉजिक आता है तो ही ना सर, लॉजिक को हम लोग ये प्रोसीड्यूरल और कंटिन्यूस असाइनमेंट दोनों में यूज कर सकते हैं। ओके, ओके। सर लॉजिक आर्यन आता एसवी है में क्या? आता है, लॉजिक एसवी में आता है सर। हाँ, हाँ, हाँ। वेरीलॉग में सर नहीं आता है, क्योंकि सर लॉजिक को इस वजह से लाया गया था कि रेज और सर वायर को मिक्स करके हम हम्म, एक डेटा टाइप बना दे, ताकि हमको दिक्कत ना हो, हम सिर्फ एक ही डेटा टाइप लिखें और वो रेज की तरह भी हम काम कर हम्म, सकें और सर वायर की तरह भी उसको काम करा सकें। ओके ओके सर। correct, हाँ, हाँ। Okay. So how many data types are there in Verilog and System Verilog? You can give some examples of both. Sir, in Verilog, sir, basically two types of data variables are there, which are mainly as net and sir register. Net are basically the values which does not hold the value, but which does not store the value. And sir, registers are used to storing the values. Hmm. And sir, There are in different types of int also, int, yes, time, sir. int, time, Ye- finish. Yes, काफी sir. सारे। Yes, sir. They are also there, but in sir Verilog, basically, mostly the commons are these two to define हम्म, whether the synthesis tool will make the combinational work or the flip flops, like sequential Okay, block. fine. For this Okay, okay. answer in SV, there are logic, which is the combination of reg and wire. There Hmm. are sir bit, sir byte, Hmm. logic, Hmm. integer, int, long int, Hmm. and so Hmm. answer. I don't know about float is there or double is there. सॉर्ट Yeah, short isn't also there. Okay, fine, 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 fine.
Okay. Okay. So tell me about the four can join. Like, what is the four can join in system Verilog? So with example also, give one example. Okay, sir, I will give it. Four join none, four join all those things you can explain. So who want to explain this question? By example, sir, I want. Okay, okay, fine. So Aryan will tell me about the interface in system Verilog. What is why we use interface? Like, tell me about the interface, and you can make the diagram also, architecture diagram if you want. Okay, sir. Sir, Hmm. Sir, basically this is the diagram. So this is the test bench. So this is the DUT, and this middle block is the interface, which is used between the Hmm. test benches and the DUT for the communication. Sir, interface Hmm. holds all the interface holds all the variables which we need to drive the DUT. Hmm. 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 Sir, actually, for we use interface in the system Verilog for our simplicity because, sir, other if suppose we have to change the duty and mostly the test benches are same in the SV because of the OOPS concept. So, sir, if Hmm. suppose the duty changes and the number of inputs have increased, so without changing all the inputs where it is used in the test bench, we just simply in include the number of inputs which have been increased in the interface, in the driver, and in the monitor for the Hmm. reusability of the same test benches. Hmm. 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 Okay, Mm, okay. So we are using virtual interface or like physical interface here. Sir, actually, we use sir. Actually, test bench is a dynamic because we use Okay. randomization Hmm. for the generate random inputs. So actually, Hmm. for test bench, it act as a virtual interface. But sir, DUT is a physical hardware which has to be synthesized. So there, it is a physical interface. So, sir, Okay. to bridge the communication gap between the virtual and the physical interface, we have to use this. Okay. Okay. Fine. Fine. Oh yeah. Oh, so Ankit, show me. Yes, sir. Uh, Screen visible है? हाँ हाँ अभी visible है. हाँ. Yes, sir. Sir, in normal case, in fork join, sir, the output, sir, ये right side में test bench वाला में output, sir, मैंने लिखा हुआ है. First of all, Hmm. sir, hello one will print, then hello three, then hello two, and then hello four. Then it will print last, hello last. Hmm. In Hmm. simple case, fork and join. Okay, sir. Okay. If Okay. I write join any, sir. Sir, join any means first of all it will complete one block. Then, uh, for example, one or two will execute first. Then after that last will execute. Then after three or four execute. Join any में. Hmm. 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 और Okay. Fork join none. हाँ for and in sir none uh, first of all sir yeah, last will print, then one, two, three, four will print. Okay. Okay. Fine.
ओके फाइन फाइन। बाकी बेसिकली आपको एक डायग्राम भी आता है राइट? आपने डायग्राम देखा है वो 4 का वो जो हाँ, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के हिसाब से आता है, वो भी आप बना सकते हो राइट? ओके ओके सर। एक्सप्लेन करने के लिए आउटपुट वाला। आई गेस हमारे लेक्चर्स में पढ़ाता हो। कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल बुक्स। टेल मी व्हाई वी यूज द मेल बुक्स एंड हैव यू यूज्ड इन द फीफो? आपने आर्यन वेरिफिकेशन किया है राइट? तो जैसा मेल बॉक्स आपने यूज किया होगा। जैसा तो टेल मी व्हाट द मेल बॉक्स, व्हाई वी यूज द मेल बॉक्स and why we what is the need of the mailbox basically. So and you will tell me the diff yeah Ankit will tell me what the packages, like what are the packages in Verilog. What are the packages in Verilog? हाँ, or if you don't know the way packages, you can tell me about the different type of arrays, Different different types type of of arrays in system array Verilog. array. Okay हाँ okay. हाँ हाँ. What are the system Verilog associative array, package and हाँ packaged हाँ हाँ. all type of array with the example. Okay sir. Sir, first of all, I write example, then I will explain ना. हाँ 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 Okay. सर हाँ हाँ Uh, आर्यन। sir, sir, mailbox is used for the communication between the components of the test benches. Sir, like in system Verilog test bench, there is generator, driver, monitor, and scoreboard. So, sir, when we generate the sequence, then the such a generated sequence which has to be go to the driver so that it can drive the duty. So, sir, from generator to the driver, it is the duty of the mailbox to communicate between them. Answer when the output of the duty will come to the test benches, the monitor will collect that. Answer it will go to the scoreboard to check with the actual expected output. The output of the duty is coming out to be the same as expected in the scoreboard. So, sir, the output which is coming from the duty has to be move on from the monitor to the scoreboard. So there also we use mailbox to communicate between them. Okay, sorry. Oh yeah. So Aryan, tell me about the associative array. Sir, associative error. Associative array. Array नहीं पढ़ा आपने? कहाँ से पढ़ा एसोसिएट And why we use associative array? क्यों यूज करते हैं? सर एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि सर एक्चुअली सर इसमें एक स्पार्स मैट्रिक्स होती है जिसमें सर मैट्रिक्स जो बहुत बड़ी होती है लेकिन उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो जीरो होते हैं तो सर वो मेमोरी बहुत ज़्यादा खाते हैं हमारी। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें एसोसिएटिव एरेस का यूज करते हैं जिसमें सर हम लोग इंडेक्स बताते हैं उसमें और वो सर उस इंडेक्स पे जाके हमें वैल्यू देता है। लाइक अगर सर एरे अगर हम लोग की 50 क्रॉस 50 है लेकिन सर उसमें सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स हैं जिसमें वैल्यूज हैं और बाकी सब जगह जीरो है। तो सर हम पूरी मैट्रिक्स को ना स्टोर करा के सर हम सिर्फ उन तीन एलिमेंट्स को स्टोर कराते हैं मैट्रिक्स में। इसके लिए हम हम्म। सर एसोसिएटिव एरे यूज करते हैं जिससे हमारी बहुत ज्यादा मेमोरी बचती है। ठीक है। ओके फाइन। तो सर बाकी ये सर या कंटिन्यू। सर मेरे को मतलब कि यही याद आ रहा था इस समय एसोसिएटिव एरर से रिलेटेड पता नहीं मेरे को सही है या नहीं। ओके, पैक्ड एरे अनपैक्ड एरे पढ़ा है आपने? हाँ सर पैक्ड एरर एंड पैक्ड एरर पढ़ा है सर। उसमें क्या होता है? उसमें सर
अब सर पैक्ड एरे में क्या होता है सर, एलिमेंट्स को हम लोग पैक कर देते हैं और उसको एक इंडेक्स पे स्टोर करा देते हैं। और सर अनपैक्ड जो होता है सर, उसमें सर एक पर्टिकुलर एलिमेंट सर एक इंडेक्स पे स्टोर होता है। हम्म। तो जब भी आप एक्सप्लेन करोगे ना इंटरव्यू में, पेपर उस पे एग्जांपल के साथ करना है ना। यस सर। एग्जांपल के साथ करोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आती है। हाँ, अंकित यू कैन शो मी। यस सर, माय स्क्रीन इज विजिबल सर। हाँ हाँ, विजिबल। हाँ सर, ये इन डिजाइन साइड, इन डायनेमिक एरे सर, वी कैन we can give the value, we can give the size at run time in dynamic array. ओके सर, ये डायनेमिक एरे का है सर, पहला वाला सिंटैक्स। हम्म इन सर एसोसिएटिव एरे, एसोसिएटिव एरे में सर हम लोग क्या करते हैं कि जो इंडेक्स लेते हैं वो हम लोग किसी भी डिफरेंट डेटा टाइप्स का हम लोग इंडेक्स ले सकते हैं। ये हम्म एसोसिएटिव एरे का एडवांटेजेस है कि इंडेक्स हम लोग अपने अनुसार से चूज कर सकते हैं। नॉर्मल एरे में सर अधिकतर जगह इंटेजर ही टाइप का इंडेक्स होता है, बट एसोसिएटिव एरे में हम लोग स्ट्रिंग टाइप का ले सकते हैं, इंट टाइप का ले सकते हैं, बिट टाइप का ले सकते हैं, जैसा हम लोग क्या सुविधा हो। ये एसोसिएटिव हम्म। एरे का हो गया। और स्ट्रक्चर में सर, स्ट्रक्चर में क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इज नोन एज स्ट्रक्चर। ये इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन रहता है, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं कि इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बीट, बाइट, डिफरेंट डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और एक स्ट्रक्चर होता है और सर एक यूनियन भी होता है। सर स्ट्रक्चर और हम्म यूनियन में अंतर ये है कि स्ट्रक्चर अलग अलग मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर करता है, बट यूनियन में क्या हो गया कि यूनियन में वो एक ही मेमोरी लोकेशन पे डेटा स्टोर करता है। वो अगर पहला ए में हम डेटा स्टोर करवाए हैं और फिर दूसरा बार में सर उसी को ओवरराइट करके वही मेमोरी लोकेशन में कर देगा, उस वो मतलब एक ही मेमोरी लोकेशन यूज करता है यूनियन। और स्ट्रक्चर में अलग अलग हम्म मेमोरी लोकेशन में करता है। और एनम सर नेम टाइप, मतलब वो ये नेम टाइप का डेटा टाइप है जिसमें हम लोग नेम्ड वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और ये सर, ये आपका पैक्ड एरे का एग्जांपल है, और ये सर अनपैक्ड एरे का एग्जांपल है। पैक्ड एरे में सर हम्म। मतलब ए आपका 4 बिट का है, ये पैक्ड एरे का एग्जांपल है। और सर ये ए 1 बिट का है, बट इसका एड्रेसेस 4 है। ठीक है, ठीक है। बाकी अंकित, यू हैव वर्कड ऑन द फीफो, राइट? सो मेक द आर्किटेक्चर ऑफ द फीफो। मेक द आर्किटेक्चर ऑफ द फीफो। सर आर्किटेक्चर डायग्राम, यू नो। नॉट वर्क ऑन फीफो सर। अंकित नहीं, वो आर्यन। आर्यन सर। यस सर। आर्यन, या। सो अंकित, आपने एसटी पे काम किया हुआ है? एसटी पे? किसमें सर? एसटी, एसटी। नो सर, एचटीए पे मैंने नहीं किया। ओके। सर यूवीएम पे फिजिकल किया हुआ है? डायग्राम का प्रोजेक्ट सर हमने किया था, उसमें सर एसटी का हाँ, यूज किया था क्रिटिकल पाथ देखने के लिए। और सर सेटअप कोई स्लैब नहीं। और पहले आप फीफो करो, पहले आप फीफो करो, है ना? फीफो, हाँ फीफो पे सर बात फीफो करते का हैं। आर्किटेक्चर बनाना है। हाँ हाँ, आर्किटेक्चर। सर सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस? पहले सिंक्रोनस का बना दो, फिर एसिंक्रोनस का बनाओ, दोनों बना दो आप, है ना? ओके सर। बाकी बाकी अंकित, यू विल टेल द मीले एंड मोरे फॉर द एनी sequential detector, any 4 bit sequential detector. सर इन सर इन मिले, if 4 bits are there, 1001, then states are only 4, but in more one extra states are built for in more मतलब case. बना के दिखाओ, बना के अच्छा, दिखाओ। बना के दिखाता हूँ सर। बना के दिखाओ। सर हम्म हम्म सर ये फीफो है सर, उसमें क्लॉक है, रीसेट है, हाँ सर डेटा इन है सर, डेटा आउट है सर, राइट इनेबल है सर, रीड इनेबल है। और सर हम्म एक सर +1 काउंटर है सर एड्रेस के लिए, राइट एड्रेस के लिए। और +1 काउंटर है सर रीड एड्रेस के लिए, जब राइट इनेबल और सर रीड इनेबल जब सर एक्टिव होंगे, तो उसके लिए सर हम्म। एड्रेसेस को इंक्रीमेंट करने के लिए।
और सर उन्हीं एड्रेसेस से हमें ये पता चल, अगर वो दोनों एड्रेस इक्वल हैं तो सर हमें ये पता चलेगा कि सर एम्प्टी, सर फीफो अभी एम्प्टी है। और सर हाँ, और सर हमें फुल कंडीशन तब पता चलेगी जब दोनों के एमएसबी जो होंगे सर वो कॉम्प्लीमेंट होंगे, और बाकी सारे बिट्स जो होंगे अगर वो सेम है, तो वो सर हमारी जो फीफो है वो सर अभी हमारी फुल है, ये कंडीशन होगी। ओके ओके ओके। टेल मी अबाउट द फीफो डेप्थ। फीफो डेप्थ का कोई कैलकुलेशन करके दिखाओ आप। फीफो डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं? फीफो डेप्थ होती क्या है? सर फीफो डेप्थ जो होती है सर वो नंबर ऑफ, डेप्थ होती है नंबर, क्या कहते हैं उसको? सर फीफो डेप्थ जो होती है वो हमें ये बताती है सर हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कराना पड़ेगा, कि सर हमारा डेटा लॉस ना हो। ओके ओके ओके। तो हाउ वी कैलकुलेटेड इट? लाइक आपने कोई फॉर्मूला वगैरह पता है ना आपको? सर कैलकुलेशन आती बेसिकली, है या नहीं आती है? हाँ सर कैलकुलेशन कैलकुलेशन, करिए या नहीं? हाँ सर करिए सर कैलकुलेशन। ठीक है ठीक है, बस वो उतना ही पूछना है कि कैलकुलेशन को कोई इंटरव्यू में पूछता है ना। ओके। हाँ सर वो कर रखे सर, वो डीजीक्यू से एक बुक थी सर जो हम लोग को सीनियर्स ने हाँ दी थी हाँ सर, हाँ हाँ, उसमें भी है, उसमें सर उसमें भी। बहुत सारे थे। ओके, व्हाट विल हैपन इफ राइट एंड रीड इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन सिंक्रोनस विफो? If write and read it ring simultaneously in the synchronous wave, what will happen? Uh, Sir, the distance between the write and read address will be same. So means the number of elements filled in the Hmm. FIFO will remain same, because Hmm. the read is happening. So suppose I take a synchronous FIFO equivalent to Q. Hmm. So sir, if read operation is there, so sir my number of elements filled will decrease by one, and simultaneously my write operation is also going on. So sir, my FIFO, the number of elements which is there in the queue will increment by one. So sir, the increment and decrement happening because of the read and write operation will cancel it out, and the number of elements remain same in the queue, remains Okay, it filled. will show the error or not? Error will show it or not? कुछ Uh, error दिखाएगा या नहीं Sir, दिखाएगा? mainly, sir, it will show error when empty, when the FIFO is empty, or the when FIFO is full. At Okay. that case, sir, if sir, race around condition can happen here, because sir, if it is empty, so write will have to happen first, then only it can read. Then it will not be Okay. a problem, sir. But if a read is going, if read happens first, and the write operation is happening at after the read, so at that time, sir, this sir discrepancy arise in the empty, and sir vice versa happens in the full. Okay. Okay. Fine. Fine. So it will show some error or not, like data corruption error or something like that, if Mm, simultaneously both are happening. sir, data corruption might not be possible. Okay. Okay. Just read, check it once, right? Okay. Okay, Next sir. question is from asynchronous FIFO. Why we use asynchronous FIFO? What is the need of the asynchronous FIFO? Sir, asynchronous FIFO is used when the communication is happen uh, between the two modules running on the different frequency. So there, due to this different frequencies, sir, meta stability condition can arise in the data path. So to avoid that in the data meta stability condition in the data path, we will Hmm. use asynchronous FIFO. Hmm. And So we sir, use gray code counters in this, right? yes, So sir. why we use gray code counters in this? So gray code counter is used, sir, to decrease the meta stability. Okay, how it decrease the meta stability? Sir, actually, suppose if we use a binary counter, and the transitioning is happening from 7 to 8. So, sir, all the bits
in the binary form will be switching, and when it is passing through the to one clock domain to another clock domain, so it can happen in all the bits. Metastability condition can arise, but sir, in gray code we know that only one bit changes at a time. So so sir, in rest of the path, no metastability condition will arise because no changes is going on in there. But at that path which is changing, metastability condition can arise. So sir, we significantly reduce the metastability in the addresses path. Okay, okay. So what are the different CDC issues in the asynchronous FIFO? You about CDC, right? So Yes, what are sir. the different CDC issues you have faced in your asynchronous FIFO? You have faced some issue related to the CDC in the project's asynchronous FIFO. Okay, fine. You can tell me about the CDC. What is CDC? Sir, clock domain crossing. Okay, okay, Sir, okay. when the data Hmm. is crossing from one, sir, actually, when the data is passing from one clock domain to another clock domain, means Mhm. when the data is passing from one clock frequency, which is moving at suppose 100 megahertz, and it has to give the data to another module which is running at 50 megahertz. So there it is that the data is passing from the one clock domain to another clock domain, so that is known as the clock domain crossing. Okay, okay, fine, fine. So, do you know what different type of issues or like different type of cases are there? You have the mm, idea about no different. sir, this I don't have, sir. Basically I know that when the CDC occur, there is a chances that metastability can arise. And how we can resolve it? Sir, actually, because when the metastability arises, the output of the flip flop can go to 0 or 1. So there is a Hmm. 50% chances that it can corrupt my data. So to safeguard my data, I have used asynchronous FIFO, so Hmm. that the metastability condition can shift from data path to the address path. There I So have you know used. what synchronizers or synchronizers, synchronizer, Yes, two sir. flip-flop Yes, sir. synchronizers. Yes, sir. Synchronizers, Why we sir. use it? Sir, synchronizers, we use that to reduce the MTBF, sir, mean time between failures, so that the Hmm. metastability can reduce in that addresses path. Okay, fine, fine, fine. Okay, tell me about the empty and full detection in synchronous versus asynchronous FIFO. So what is the difference between the empty and full condition in like both type of FIFO? Synchronous you already told you me. Yes, sir. Asynchronous you can tell me. Asynchronous you can tell me. Sir, if the same conditions we are using from the synchronous FIFO to the asynchronous FIFO, so we can use this, but the condition is that the equations which we are using has to be in the binary form. Means it has to be operated on the binary uh, addresses. So, sir, Okay. if we use this, so the basic condition is that we have to convert the gray code to the binary code. So Mhm. so we have to use the hardware. So it is unnecessary. We can simply change the condition of the full, and Mm. we can just reduce the hardware. So we don't have to use the hardware which we are using. That we have to convert the gray code to the binary code. And sir, the equation for the empty is remains the same in binary and gray code. Like they have to be equal. If the gray code is equal for write and read addresses, so the condition is empty. But sir, Mm. in full there is that MSB and the MSB minus 1 bit in the gray Mm. code should be different, and rest of the bit has to be the same. Then it will be the full condition. Okay. 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 So what will happen if reset is not synchronized uh, between the different domains, in read and write domains?
What will happen in asynchronous case if the reset is not synchronized? So it will show some error or not? सर Data किस is बार reset. सर प्लीज Reset is रिपीट not द synchronized. Reset is not synchronized among domains. ओके सर So it will show some error or not? सर दिस आई डोंट नो Okay, just check it once. Right. ओके सर Okay. So अंकित तो बताइए क्या डाउट है, क्या क्या कर लिया आपने? हाँ, ये सर मिले वाला है। FIFO हम्म सर ये मिले वाला में है। ये है कि सर 10 वाला स्टेट था। इसमें सर 4 ही स्टेट बना। और उसके बाद आपका 4 स्टेट्स में ये मिले का हो गया। ये इसका अगर मोरे का हम लोग बनाते हैं, हम्म इसमें सर वही कंडीशन अगर लगाने के लिए मेरे को 5 स्टेट्स लग गया। और इसमें सर आउटपुट जो होता है हम लोग ये स्टेट्स के नीचे लिखते हैं, बट उसमें मिले में सर वो आउटपुट्स हम लोग स्टेट्स में नहीं लिखते हैं, मतलब वो डिपेंड नहीं करता। हम्म ठीक है, करेक्ट है। ओके ओके फाइन। बाकी आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है अभी, और लाइक सिस्टम में लोग पढ़ा हुआ है आपने, एस यूवीएम यूवीएम? सर पढ़ा हुआ तो मेरा है सर। रिवाइज मैंने नहीं किया। मैंने सिस्टम ठीक है, वेरिलॉग भी कोई पढ़ा है नहीं, और यूपीएम भी पढ़ा है। बट रिवाइज ने कोई मैंने नहीं किया, वेरिलॉग किया हुआ था। कोई नहीं, कोई नहीं। कल किसका इंटरव्यू लें हम आपका? कल सेकंड राउंड किसका लें? कौन से टॉपिक्स का ले सकते हैं? प्रोजेक्ट्स में? प्रोजेक्ट्स नहीं करे अभी आपने? प्रोजेक्ट सर मैंने ये राउटर किया हुआ, थोड़ा बाकी है। कोई नहीं, कल हम यूवीएम का लेते हैं, प्लस एसटी का लेते हैं, एसटी एंड यूवीएम, और एफएसएम, एफएसएम का, सर सीडीसी का। हाँ, एच टी ए। यूवीएम यूवीएम एंड एसटी है, यूवीएम एसटी है। सर एच टी ए मतलब वो जो एक फाइल मैंने आपको सेट बताया वो वाला। एसटी सेटअप टाइम, होल्ड टाइम, ऑल दीज थिंग्स, अच्छा अच्छा। static timing analysis, UVM plus other things we will take, fine, CMOS and ST, fine। आर्यन ठीक है, आर्यन कल करते हैं ना? ओके सर ओके फाइन। और बाकी सर कोई एक क्वेश्चन है बताइए। हाँ, यस सर। सर फॉर डिजाइन एंड वेरिफिकेशन इंजीनियर सर, इसमें हम लोग को सर एसिंक्रोनस फीफो फीफो राउटर ये सारा प्रोजेक्ट्स करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 3। और अगर और एस बी यूवीएम ये सब में उसके लिए भी दोनों में ही मतलब करना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स। उसके लिए मतलब कौन कौन सा प्रोजेक्ट करना होगा, ऐसा कुछ उसमें जैसे भी इसमें सेम उसको ही प्रोजेक्ट्स करने वेरिफिकेशन। पड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। वेरिफिकेशन में पूरा कोड नहीं लिखवाएंगे, वो छोटा छोटा ब्लॉक से लिखवा सकते हैं, है ना? लेकिन बस आपको आइडिया होना चाहिए, वो पूरा प्रोजेक्ट नहीं लिखवाएंगे स्क्रैच से, ओके सर। लेकिन छोटा मोटा ब्लॉक्स लिखवा सकते हैं ना। बाकी हम्म। कल कंटिन्यू करते हैं यूवीएम से और एस टी ए, है ना? बाकी ओके फाइन। सर एच टी ए का ओके, हाँ सर एच टी ए का वीडियोस तो मैंने देखा नहीं है, एस बी का हो सकता है। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, हम अकॉर्डिंगली ले लेंगे, आपको यूवीएम का करा देंगे, या फिर एसवी के बाकी डिजिटल के भी काफी क्वेश्चंस बचे हैं अभी, मार्क्स वगैरह, है ना? वो हम हाँ पूछ हाँ। लेंगे। ओके ओके सर। ठीक ठीक, थैंक ओके यू सर। फाइन, थैंक 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 गुड थैंक यू नाइट सर। थैंक यू, गुड थैंक नाइट। यू सर एंड